Hello students, the question is identify the valid statements relevant to the given circuit at the instant when the key is closed. Statement 1, Statement A, there will be no current through resistor R. Statement B, there will be maximum current in the connecting wires. Statement C, potential difference between the capacitor plates A and B is minimum. Option Statement D, charge on the capacitor plates is minimum. Choose the correct answer from the options given below. Option 1, CD only. Option 2, BCD only. Option 3, AC only. And option 4, ABD only. So the problem is based on some basic concepts of the circuit in the initial condition. Initial condition means when the key is pressed, and there are some passive elements such as resistor and capacitor energized by a DC source. So this is the DC source, which is 5 volt value. Now when the key is pressed, when the key is closed, basically there is a certain change in voltage. And we know that the current in a capacitor is given by I equals to C dV by dt. Now if within a very fraction of time, within a very small interval of time, if we change V in a very large amount, because this is switching from 0 volt to 5 volt, so within a fraction of second, so this ratio dV, this particular derivative dV by dt is very large, so it means that the current is very large, and it is not infinite because there is a presence of a resistor, but it is very large. So we can say that there will be maximum current in the connecting wire. So this is the correct option. There will be no current through the resistor. This is a false statement, because as soon as we close this key, then momentarily this capacitor behaves like a short circuit. For a single moment, it behaves like a short circuit and it passes the maximum amount of current. According to this particular mathematical explanation, I have also said that the current is very large, and when the current is very large, it means it is momentarily short. So this statement is false, that there is no current through the resistor R. There will be a current through resistor R, and the current is very large value. Current is of very large value. Now the potential difference between the capacitor plates A and B is minimum. Potential difference is minimum, it is said. It is a true statement, because when there is a large amount of current, it is nearly equal to a short circuit, and a short circuit always denotes that, always basically say that the voltage is zero. Voltage is nearly equal to zero when the current is very large. When the current is infinite, when we can say that the voltage is zero, but when we say that the current is very large, it means that the voltage is very small. So the voltages or the potential difference between the A and B plates is minimum value. So this is also a true statement, correct statement. Now the charge on the capacitor plates is minimum. This is also a true statement, because charge is related by the potential difference by Q equals to CV equation. C is finite there. There is air in between the medium, but there is a certain value of C, that the capacitance, but the value of V is very small. That's why the value of the charge is also small. That charge is minimum. So that's why this statement is also correct. So we can say that option 2 is the correct option here, that B, C, D, these are the करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन बेस्ड एक सर्किट दिया गया है. इस सर्किट को एनर्जाइज किया गया है एक 5 वोल्ट डीसी सोर्स से, और इसमें आर और सी यानी रेजिस्टर और एक कैपेसिटर, दो एलिमेंट सीरीज में लगे हैं. कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम के तौर पे शो किया गया है. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको हमें वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट हैं या नहीं है. तो इसमें सबसे पहले जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, हम तुरंत ही 0 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ वोल्टेज को स्विच कर रहे हैं. जैसे ही वोल्टेज इन्फाइनेटली स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में 0 से 5 वोल्ट पे स्विच होगी, करंट एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के थ्रू जो करंट होती है उसका फॉर्मूला होता है आई सी, दैट इज द कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी. तो यहाँ पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है वोल्टेज में सडन चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये डेरिवेटिव डी बाई डी टी काफ़ी लार्ज होगा, और अगर ये काफ़ी लार्ज होगा इसका मतलब करंट काफ़ी लार्ज फ्लो करेगी जैसे ही ये क्लोज किया जाएगा. वो बात अलग है कि स्विच को क्लोज करने के बाद धीरे धीरे कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग स्टेट में आएगा और करंट जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन जिस मोमेंट पे इसे क्लोज किया गया है उस समय करंट बहुत लार्ज होगी. और हमसे वही पूछा गया है
जिस समय की को क्लोज किया गया हमसे वही इंस्टेंट पे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इस हिसाब से करंट काफ़ी लार्ज होगी, मैक्सिमम करंट होगी कनेक्टिंग वायर में, बी स्टेटमेंट सही है। देयर विल बी नो करंट थ्रू द रेजिस्टर, ये गलत स्टेटमेंट है। करंट जो काफ़ी लार्ज करंट फ्लो करेगी जैसे ही की को क्लोज किया जाएगा तुरंत उस समय। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो होगा वो मिनिमम होगा, डेफिनेटली मिनिमम होगा, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो हो रही है, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट को इंडिकेट कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट को इंडिकेट कर रही है मोमेंटरली। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट की बात की जाती है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसका मतलब ये है कि एक लार्ज करंट का मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है ओम्स लॉ के हिसाब से, सिंपली बिकॉज यहाँ पे जो है वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, रेजिस्टेंस जो है काफ़ी कम होगी तभी करंट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लो होगी, और वोल्टेज ड्रॉप जो है V इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंगली काफ़ी कम होगा, क्योंकि इस मोमेंट पे रेजिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होगी। करंट लार्ज है लेकिन रेजिस्टेंस काफ़ी स्मॉल है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज ऑलमोस्ट जो है वो जीरो के नज़दीक होगा, मिनिमम वैल्यू का होगा। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट में कहा गया है चार्ज जो है प्लेट्स की वो मिनिमम होगी, वो भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो उस हिसाब से अगर वोल्टेज कम होगी तो डेफिनेटली चार्ज भी कम होगा जिस मोमेंट पे की को क्लोज किया जाएगा। तो इस तरह से बी, सी और डी ये तीन ऑप्शंस जो है हमारे करेक्ट ऑप्शन कहलाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।